central atom and valence electrons. What is a central atom and what are the valence electrons in this central atom? See, we have central atom is the atom which is bonded or which share its electron pairs with other atoms. What we have to do is we have to find out central atom. To find out central atom, we have to simply follow two rules. Rule 1 says hydrogen can never act as central because hydrogen has only one electron which can be shared. So hydrogen cannot act as a central atom. It will always act as a surrounding atom. There is one central atom and all the other atoms are called surrounding atoms. Then rule 2, central atom is the atom which is first less in number and second is less electro. Your central atom will be the atom which is less electronegative and less in number. You will combine these two rules and these two again to find out the central atom. For example, I write CH4, which is central atom. Carbon is less in number, but it is more electronegative. But since this compound contains only hydrogen and carbon, and hydrogen can never be a central atom, so central atom will be carbon. NH3 central atom, nitrogen, H2O central atom, oxygen. Okay, so these are the compounds in which central atom is. So a compound if contains hydrogen and only one element, then that element will be the central atom. But if we see other cases like CCl4, chlorine is more electronegative, carbon is less electronegative, and carbon is also less in number. So central atom is that which is less in number and less electronegative. So carbon is your central atom. PCl5 central atom, phosphorus. SO2 central atom, sulfur, less in number, less electronegative. OF2 central atom, oxygen, less in number, less electronegative. XeF4, XeOF2 central atom, Xe. So you can find out central atom in any given compound by these two simple rules. One, hydrogen will be a surrounding atom and the central atom is always less in number and less electronegative. So this is how we find out central atom. Then our next task is to find out the valence electrons in the central atom. So we'll do that also. See, generally covalent bonds are formed, not generally, covalent bonds are formed between two non-metals. So we'll go with the P block. We have 6 groups in P block: 13th group, 14th group, 15th group, 16th group, 17th group and 18th group. Now what you have to do is you must remember what I am going to write here, what I am going to explain here. You must remember it. This is 13th group. This is called boron family. The elements in this family are boron, aluminium, gallium, indium and tellurium. Most of the students remember these things by some phrases. आपको भी शायद वो phrases आती होंगी, नहीं आती है तो मैं आपके लिए थोड़ी phrases brief कर रहा हूँ, ठीक है? Don't laugh on them. आप उनकी बिना इनको आसानी से याद नहीं रख पाओगे. This is boron family. इसे हम बोलते हैं बैंगन, आलू, गाजर एंड थैला. ये आपको ऐसे याद रखना है, बैंगन, आलू, गाजर एंड थैला. This is your 13th group family. You have to remember the general configuration of all the families. इसका configuration होता है NS2 NP1, where N is the number of period. This is your second period. This is third period,
4th period, 5th period, 6th period. Similarly, next family is carbon family. This is called Kahe Sita Ji Suno Prabhu. Write down in your notebook, Kahe Sita Ji Suno Prabhu. The general configuration of this family is NS2, NP. Then third is your nitrogen family. इसे हम बोलते हैं निखिल पास सब बिंदास. तो किसी का नाम निखिल हो तो याद रखना, निखिल पास सब बिंदास. दिस इज योर नाइट्रोजन फैमिली. नोट इट डाउन. इसका जनरल कॉन्फिगरेशन होगा NS2, NP3. देन नेक्स्ट फैमिली ऑक्सीजन फैमिली. इसे कहते हैं हम ओल्ड स्टाइल से टीपो. टीपो मतलब चीटिंग करना. शायद आप में कुछ लोग टीपो का मतलब नहीं जानते हो. सो ओल्ड स्टाइल से टीपो. तो यहां पर इसका जनरल कॉन्फिगरेशन होता है NS2, NP4. दिस इज कॉल्ड ऑक्सीजन फैमिली. देन नेक्स्ट हेलोजन फैमिली. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और इसे हम बोलते हैं फिर कल बाहर आई आंटी. ठीक है. और कुछ लोग इसे और कुछ भी बोलते हैं, दैट इज फिर कल बाहर आई आरती. तो आपको जो बोलना बोल लेना, बट आपको इसे याद रखना है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एटिस्टाइन. एंड इसका जनरल कॉन्फिगरेशन है NS2, NP5. देन लास्ट इज योर नोबल गैस फैमिली. यहां पर एक हीलियम भी लाई करता है जिसका कॉन्फिगरेशन तो आप जानते ही हो. देन नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड इसे हम बोलते हैं हीना, नीना और करीना की जेरोक्स रानी. हीना, नीना और करीना की जेरोक्स रानी. इस फैमिली का जनरल कॉन्फिगरेशन होता है NS2, NP6 एक्सेप्ट हीलियम जिसका कॉन्फिगरेशन होता है 2s2. तो वो हम उसे यूज इतना नहीं करेंगे. मेन हमारे पास ये है. अगेन आपको सबके जनरल कॉन्फिगरेशंस पता होने चाहिए, जो बहुत बड़ा टास्क नहीं है. फर्स्ट है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन p ब्लॉक एलिमेंट से, तो इलेक्ट्रॉन p शेल सब शेल में एंटर करेगा. NS2, NP1, NP2, NP3, NP4, NP5, NP6, NP5 एंड NP6. नाउ दिस इज nth शेल. इस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 + 1 3. इस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 + 2 4. इस ग्रुप में 2 + 3 5, 2 + 4 6, 2 + 5 7, 2 + 6 8. तो अगर मैं आपसे बोलता हूं सल्फर के वैलेंस शेल में कितने एटम्स हैं, तो सल्फर इस फैमिली से बिलोंग करता है. 2 + 4 6. फास्फोरस 2 + 3 5. क्लोरीन 2 + 5 7. So this is how we find out valence electrons in the central atom. Again आप इनमें से किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा जर्मेनियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो जर्मेनियम इज इन 4th पीरियड एंड जनरल कॉन्फ़िगरेशन इज NS2, NP2. So the configuration of germanium will be 4s2, 4p2. For example, if I have to write configuration of sulfur, sulfur is in 3rd period, general configuration NS2, NP4. So it would be 3s2, 3p. Silicon 3s2, 3p. Iodine 5th period 5s2, 5p 5. Number of valence electrons 7. Argon 3rd period 3s2, 3p6. Number of valence electrons 8. Aluminium number of valence electrons 3. Configuration will be 3s2, 3p. So this is how we find out the valence electrons in the central atom, and we can write the configuration of any of these atoms. Is that clear to you? So this was our introduction to chemical bonding.